load will be transferred to beams or directly to columns, and from the column to foundation. And if there is a load bearing wall system, so in that system the load will be transferred from the slab to the wall, and from the wall to the footing underneath. Okay, so these are contents of the presentation: production, types of foundation, wall footing, and then isolated footing or column footing. The substructure or foundation is the part of a structure that is usually placed below the surface of the ground and that transmits the load to the underlying soil or rock. So this is the definition of foundation, and this you know very well, because the load coming from the column or wall will be transmitted to the soil underneath by the foundation. Okay, so you must design foundation to those loads. Okay, foundation is regarded as the most important component of engineering system. Why? Because if foundation fails, the whole system will fail. Okay, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. Foundations can be divided into two broad categories depending on the depth of foundation. So, depending on the depth of foundation, there may be shallow foundation where load transfer occur at shallower depths, like isolated footing, wall footing, combined footing, mat footing. All these types of footings, they are they lies in the category of they lie in the category of shallow foundation. Deep foundation with a low transfer occur at deeper depths, like for example piles, drill piers, drill caissons. All these are called the deep foundation. Sometimes there are basements, for example 4 or 5 basements in a multi-story building, and there is mat or rough foundation given. Okay, so will that be shallow foundation or deep foundation? Anyone? Can you tell me? सर ये पाइल्स के ऊपर वो मेट बनाते हैं। नहीं, 4-5 बेसमेंट्स हो अगर हो और नीचे राफ्ट फुटिंग हो तो वो शेलो फाउंडेशन हो, डीप फाउंडेशन? सर डीप शेल हो होगी गया ना। शेल होगी, जाहिर है। इसका लोड ट्रांसफर अकर एट डीपर डेप्थ का मतलब ये नहीं है कि ये एट एट डेप्थ यू हैव गिवन दिस फाउंडेशन। एट डीपर डेप्थ का मतलब है कि इट विल ट्रांसफर द लोड। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको देखें, ये पाइल है तो द लोड इज ट्रांसफर एट डीपर डेप्थ, इसका ये मतलब है। ये आपके पास राफ्ट है तो लोड इज ट्रांसफर एट शेल डेप्थ। ओके, isolated or column footing. Isolated column footing carrying a single column is usually called spread footing. इसको हम spread footing भी कहते हैं, isolated column footing भी कहते हैं। This is given for a single column to support the load of a single column. Okay, these are some arrangement. They may be tapered, like for example you can see here, or stepped to save material because the demand will be more at this location. So आप इसको tapered भी बना सकते हैं या स्टिप भी बना सकते हैं to save the material. Okay, wall footing you can see here. This is the wall, and you can see the footing given below the wall. Wall footing or strip footing display essentially one dimensional action. अच्छा, इसमें अगर आप देखें तो it will bend in this way. Okay, so this is one way action. So you can design the wall footing just like a one way slab. बात समझ में आ रही है? Cantilevering out on each side of the wall. आप आगे पढ़ेंगे भी
The design of wall footing and one-way slab is almost same, okay, because the action is one way. It bends only in this direction. In the longitudinal direction, in this direction, we will give only the minimum reinforcement. Combined footing. A combined footing is a type of footing supporting two or more than two columns. So if the footing is supporting two or more than two columns, then that footing is called combined footing. There are two common configuration of combined footing. Number one, two column footing. Such a footing is often used when one column is close to a property line. तो ये अगर आप देखें this column is close to a property line, तो इसको हम combine करते हैं with interior column. This is basically a exterior column. Okay. Number two, column strip or multiple column footing. A combined footing may also be used if the space between adjoining isolated footing is small. For example, if you give isolated footing for this column, for this column, for this column, and if the spacing between these isolated footing is very small, तो बस आप इसको फिर combine करते हैं, सही है? इसको हम strip footing भी कहते हैं normally. Mat footing. A mat or raw foundation transfers the loads from all the columns in a building to the underlying side. So a continuous mat is given below the columns of a building that is known as raw foundation or mat foundation. Mat foundations are used when excessive loads are supported on a limited area or when very weak soils are encountered. ये दो इसकी रीजन हो सकते हैं, या तो आपके पास साइल बहुत ज्यादा वीक हो, ओके, साइल वीक हो तो उसकी बेयरिंग कैपेसिटी कम होगी, जाहिर है, ओके. तो इफ योर लोड इज greater than the bearing strength of the soil, so you will give the raft footing. Okay, raft will basically increase the bearing area. And और ये भी एक रीजन हो सकता है कि आपके पास साइल तो वीक नहीं है, but you are supporting excessive loads on that soil. Excessive load का मतलब कि for example if it is a multi-story building, if it is for example a 40-story building, so this load is very high, and if the soil is even stiff, so you have to provide mat foundation for that, okay, to increase the bearing area. Mat footings are essentially inverted slabs and hence they have as much configurations as typical slab system. जिस जो भी configuration हम typical slab system में देते हैं flat slab system में, if you remember हम उसमें क्या क्या देते थे, column capital और drop panels, so all these can be given, you can give in the mat system, okay, to reduce the punching shear problem. You can see here this is beams, just like inverted beam slab system. There's also mat footing but with beams, okay. This is mat footing without beams. This is mat footing with drop panels, and this is mat footing with column capitals. बस जो स्लेब सिस्टम है उसको आप इन्वर्ट करें, this will be essentially your mat footing. Pile foundation. This type foundation is essential when the supporting ground consists of structurally unsound layers of material to larger depths. For example, if there are weaker soil in the top, तो आप क्या करते हैं, and there in stiffer soil are there at deeper depth, तो आप उसमें pile देते हैं to transfer the load of column to the deeper depths, okay. The piles may be either end bearing or skin friction or both. So in end bearing pile, the load is transferred only at the end, at the tip, okay. In skin friction pile, the load is transferred through these
through the perimeter area, or both, or maybe combination of both. ये बातें समझ में आ रही है? Yes, sir. Choice of foundation. The choice of foundation type is selected in consultation with geotechnical engineer. So basically, geotechnical engineer will is responsible to tell you that which type of footing will be used. However, we the structural engineers also select the footing type based on these consideration, these factors: soil strength, soil type, variability of soil type over the area and with increasing depth. Okay, so I told you that if, for example, there is soft soil in the upper layers and harder soil in the lower layer, so then you can use piles. Susceptibility of soil and building to deflections. Agar, for example, if there is strength requirement is okay, but if there is excessive deflection in a soil due to the superimposed load, so then uh, to to basically reduce the differential settlement, we are giving rough foundation. Okay, because differential settlement is mainly a problem in the buildings. Okay, construction methods, कौन से construction method as पर भी depend करता है. So these factors will basically dictate the choice of foundation. Okay, type of footing to be discussed in the next slides is number one, wall footing, number two, isolated column footing. Wall footing. तो wall footing में आप देखें, मैंने आपको बताया था, this is that wall footing which you have seen in 3D, and you can see this the action is only in this direction. So can you tell me where will be the tensile stresses? In the upper face or in the lower face? In the lower face. In the lower face. So you will design this footing and you will give the reinforcement, the main reinforcement in the lower face in this direction. Okay. और फिर दूसरे डायरेक्शन में आप देंगे, that will be shrinkage or temperature reinforcement. The wall footing behaves just like a cantilever. अच्छा, it behaves like a cantilever because load will act on this side. और अगर आप इसको invert करें तो this is like this. Okay, तो बस आप इसको ये मोमेंट ज़रा कैलकुलेट करें, इसको कैलकुलेट करेंगे, उसी के लिए बस आप डिज़ाइन करेंगे. Just like a cantilever where the cantilever extends out from the wall and is loaded in an upward direction by the soil pressure. So this load will be applied on the soil and soil will exert pressure in the upward direction. You can see this in the deformed shape. ये समझ गए? अच्छा, now अगर आप देखें तो ये हमारे पास ये हम इसको इस तरह कर सकते हैं, ये लोड है. ओके, एंड फॉर एग्जांपल दिस इज कॉलम की डायमेंशन है h और विड्थ ऑफ फुटिंग दिस इज फॉर एग्जांपल b. ओके, तो what is the length of cantilever? It is very simple. The length of cantilever will be equal to b minus h divided by 2. इस तरह है कि नहीं? ये डिस्टेंस ये कितना है? ये b minus h by 2 होगा कि नहीं? Yes, sir. So you will
calculate the basically the, or is be, you will calculate the moment at the face of the column, this moment. Okay, so if you have this L, so bearing pressure आगे हम डिस्कस करेंगे how to calculate the bearing pressure. उस bearing pressure multiplied by bearing pressure multiplied by L square divided by 2. This will be your moment. Okay, बस इसी के लिए आप डिजाइन करेंगे. Once you calculate moment, so वही ट्रायल एंड एरर से आप एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं. बात समझ में आ रही है ना? यस सर. ये अगर आप देखें, मैं दोबारा समझे, दिस इज द width of footing, for example B. Okay, you will calculate the moment at this face, and for example this thickness is h. Okay, तो what will be this distance? ये distance आप calculate करेंगे. For example this is distance denoted by k, so k will be equal to b minus h divided by 2. इस तरह है कि नहीं? हाँ, यस सर. okay, so once you calculate the k, this bearing pressure will be given to you, this bearing pressure exerted on this, ये जो bearing pressure है ये आप calculate कर सकते हैं from the given load. So mu will be equal to qu into k square divided by 2. This is the moment. Once you calculate the moment, you can calculate the design reinforcement from the trial and error. Okay, अच्छा, ये monolithic के लिए you will calculate the moment at the face. If there is a masonry wall like this, इस केस में ये तो masonry wall है, उस केस में आप k at the face of the wall आप k नहीं ले सकते, यानी L moment, that will be somewhere inside the toward the inner side of the wall. Okay, ये आपके पास वॉल है. अगर ये मोनोलिथिक हो, फॉर एग्जांपल कॉलम हो या आरसी वॉल हो, तो फिर तो आप फेस पे लेंगे, सही है. मगर ये इस तरह का मशीनरी वॉल हो तो फिर आप दिस विल नॉट बी एट द फेस. ये कितना डिस्टेंस होगा, ये इनर, ये इसमें आ रहा है, सही है. बात समझ गए ना? इतना तो आप समझ गए ना कि this distance will be taken from the face of the wall if there is RC wall, or if there is column, so you can also take it from the face. But if there is masonry wall, so this K will be taken from the extreme footing face up to the inner side of the wall. अब ये कितना इनर होगा ये आगे हम डिस्कस करेंगे, सही. इस तरीके से अगर आपके पास ये स्टिप फुटिंग हो तो फिर आप के लेंगे, ये वैल्यू लेंगे जो क्लियर लेंथ है. Main reinforcement for flexure is placed at the bottom of the footing perpendicular to the wall along the short direction. तो ये आप देख सकते हैं, this is main reinforcement. मैंने आपको बताया था main reinforcement will be given closer to the tension phase. और उसके बाद फिर ये जो आप देख रहे हैं
it dotted. These are the temperature reinforcement. Okay. Temperature reinforcement placed at the bottom of the footing parallel to the wall along the long direction. This you know very well. Okay. ये इसकी एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं। इसमें आप देखें, these are main reinforcements, ये जो गिवन है। इसमें आप हुक देखें, hooks are 180. Okay, and these three bars which are given in this direction, they are temperature reinforcement or shrinkage reinforcement. Required footing bearing area. अच्छा, अब इसको अगर आप देखें, this is a typical footing. Normally we give the footing at some depth which is denoted by Z. तो आपको पता है, we give the footing normally at 3 to 4 feet depth. Why? Because to remove the weaker soil of the upper layers. Okay, तो जो अपर लेयर पे जो वीकर साइल है उसको हम रिमूव करते हैं, एंड वी प्लेस द फुटिंग ऑन द harder surface. So this distance from finished floor level up to the depth where the footing is rested is denoted by Z. Okay, there will be load acting on this, and the depth of footing, that is the thickness of footing, is denoted by H. बात समझ में आ रही है? तो अब आप क्या करेंगे? फुटिंग को डिजाइन करने के लिए भी बिल्कुल वही आपके पास प्रोसीजर वही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सिलेक्ट द साइज, ओके, एंड देन, और इस साइज से मतलब है कि एरिया फुटिंग, एंड सेकेंडली थिकनेस एंड इन्फोर्समेंट। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसकी थिकनेस और रीइंफोर्समेंट पर आप डिजाइन करेंगे। तो द फर्स्ट स्टेप इज टू सेलेक्ट द साइज ऑफ फुटिंग। तो साइज का मतलब है कि विड्थ जो है, विड्थ ऑफ फुटिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डिसाइड द विड्थ ऑफ फुटिंग। Where from this width will come? This is coming from the bearing capacity of the soil. Bearing capacity of the soil, if the soil is weaker, you will need more width. If the soil is stiffer, you will need smaller width. Okay, बात समझ में आ रही है? यहां पर आप देख सकते हैं, bearing area A required is service load divided by Q effective. अच्छा, ये Q effective किसे कहते हैं? ये जरा मैं आपको बता देता हूं। QA will be given to you, ये याद रखें। सही, allowable bearing pressure, bearing capacity will be given to you. अच्छा, ये तो allowable bearing capacity है। This is a footing, for example. Okay, this is load. Load is, for example, P. And area required. अच्छा, bearing capacity, allowable bearing capacity AQA, this is given to you. अच्छा, I told you that
this will be given at certain depth, and their depth is noted by Z. Okay. Thickness of footing, for example, it is H. Okay. So what you will do, the bearing pressure produced by this soil and this weight of the foundation, this will be subtracted from a liable bearing capacity. So this will give you effective bearing capacity. Effective bearing capacity will be equal to the allowable bearing capacity minus, इसको हम डिनोट करते हैं with W, where W is the bearing pressure coming from the weight of the foundation and weight of the soil, because this will produce bearing pressure. Okay. So how to calculate that bearing pressure is very simple. Bearing pressure due to weight of the foundation is gamma of foundation, so gamma of concrete, because this will be concrete foundation, multiplied by thickness of foundation, or plus gamma of soil. You want to wait. Now I'm talking about this area. Okay, soil है, multiplied by thickness of soil. Thickness कितना है, कोई बता सकता है? Z minus H. Z minus H. Okay, so this is that W, that is overburden pressure exerted by the weight of soil and weight of foundation. So you have to subtract this bearing pressure from the allowable bearing capacity to get the effective bearing capacity. So the effective bearing capacity will be QA minus this W. Okay. Once you get this Q effective, this will be used in the calculation of area, in the calculation of footing area. Okay, so the footing area, required area, can be calculated using service load divided by Q effective. Okay, because Q effective will be in kip or pound per square foot. This is in kip per pound, so it will cancel out and you will get the area. Okay, this is A required. So why we use service load for the calculation of footing area? Why don't we use factored load? ये बता सकता है? ये हम सर्विस लोड इसलिए यूज करते हैं in the calculation of footing area, because the factor of safety is already given in the calculation of Q effective. Q allowable, जिससे हम Q effective calculate करते हैं, इसमें ऑलरेडी फैक्टर ऑफ सेफ्टी 3 यूजुअली गिवन होती है. तो अगर आप इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करें और इसमें भी फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि सर्विस लोड से आप अल्टीमेट लोड तभी फाइंड कर सकते हैं ना जब आप इसको 1.4 to 1.6 में मल्टीप्लाई करें, तो इट विल बिकम अनइकोनॉमिकल, क्योंकि फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपके पास लोड में भी आ जाएगी और इसमें भी आ जाएगी. इट विल बी डबल फैक्टर ऑफ सेफ्टी. That is why we are not using factored load in the
determination of footing area. Okay. अच्छा, अब जब आप बेयरिंग प्रेशर कैलकुलेट करते हैं, दिस बेयरिंग प्रेशर, उसमें फिर आप फैक्टर लोड यूज करेंगे। उसमें क्या करेंगे, फिर आप फैक्टर लोड यूज करेंगे। और वो किस तरह आप करेंगे, आपने ये बी तो कैलकुलेट किया होगा, एरिया से बी भी आ जाएगी, तो आपके पास क्यू यू, दैट इज बेयरिंग प्रेशर इंसर्टेड हेयर, ये क्यू यू है, सही। दिस विल बी इक्वल टू पी यू, नाउ यू विल यूज फैक्टर्ड डिवाइड बाई एयर रिक्वायर्ड, जो आपने एरिया ऑफ फुटिंग निकाला था उस पर आप बस डिवाइड करें, यू विल गेट द बेयरिंग प्रेशर। ओके, बस ये दोनों चीजें आपके पास आ जाए तो बस, बाकी तो डिजाइन सिंपल है, मैंने आपको जिस तरह बताया कि बस आपने यहाँ पर मोमेंट फाइंड करना है। मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस, वो आप कैलकुलेट करें, मोमेंट कैलकुलेट करें, एंड फ्रॉम ट्रायल एंड एरर कैलकुलेट द डिजाइन इन्फोर्समेंट। एशियाई कोड डिजाइन रिकमेंडेशन फॉर फ्लक्चर, तो ये डिस्कशंस इस स्लाइड पे जो है ये ऑलरेडी हमने की, सही। बेयरिंग एरिया सर्विस लोड डिवाइड बाई क्यू इफेक्टिव, क्यू इफेक्टिव किस तरह कैलकुलेट करते हैं, क्यू ए माइनस डब्ल्यू, हाउ टू कैलकुलेट डब्ल्यू, डब्ल्यू इज वेट ऑफ फिल प्लस वेट ऑफ कंक्रीट फुटिंग। ओके, weight of fill is equal to gamma fill into z minus h, weight of concrete. Usually the fill material is soil, so that is why I used gamma soil. Okay, bearing pressure, so Q u is equal to factored load. Now you can see here the factored load divided by A required. Minimum thickness requirement, minimum thickness shall be selected such that the effective depth of bottom reinforcement is at least 6 inches. अब बात समझ में आ रही है, तो आप थिकनेस, इसका क्या मतलब है, द इफेक्टिव डेप्थ शैल बी 6 इंच, तो इफेक्टिव डेप्थ अगर 6 इंच हो तो उसके साथ आप बार डाया को भी प्लस करें और उसके साथ आप क्लियर कवर को, क्योंकि आप ये जो रिइंफोर्समेंट देते हैं ना, देखिए आई टोल्ड यू दैट द क्लियर कवर फॉर फुटिंग इज 3 इंच। ओके, तो अगर आपके पास ये एटलीस्ट डी इट विल बी 6 इंच एज पर कोड, तो उसके साथ 3 इंच भी आप प्लस करें। ओके, और कुछ ना कुछ बार डाया तो एटलीस्ट 9 इंच थिकनेस विल बी रिक्वायर्ड फॉर वॉल फुटिंग। ओके, द वॉल फुटिंग इज डिजाइन लाइक ए बीम और वन वे स्लेब, तो वन वे स्लेब भी डिजाइन होता है लाइक ए बीम, तो बीम या वन वे स्लेब की तरफ डिजाइन करते हैं बाय कंसीडरिंग ए टिपिकल 12 इंच वाइड स्ट्रिप अलोंग द वॉल लेंथ। तो अगर आपको याद हो, वी यूज द स्ट्रिप मेथड फॉर द डिजाइन ऑफ वन वे स्लेब, तो इसमें भी आप बस एक स्ट्रिप लेंगे और उसी के लिए आप डिजाइन करेंगे, सही, उसको आप डिजाइन करें, बस फिर उसको आप रेप्लिकेट करें, बिकॉज आप इसके लिए अगर करेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपके पास ए एस आ जाएगा, एस विल बी इन इंच स्क्वायर पर फुट। ओके, तो बार एरिया डिवाइड बाई कैलकुलेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाई 12, you will get the spacing of main reinforcement. अब क्रिटिकल सेक्शन पे आते हैं। द मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट इज कैलकुलेटेड एट क्रिटिकल सेक्शन। अब क्रिटिकल सेक्शन मैंने जिस तरह आपको बताया था, फॉर ए फुटिंग सपोर्टिंग कंक्रीट वॉल क्रिटिकल सेक्शन इज लोकेटेड एट द फेस ऑफ द वॉल। अगर ये कंक्रीट वॉल हो या आपके पास कॉलम हो, so then this will be at the face of column critical section। उसमें जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप कैलकुलेट करें, के इज वेरी सिंपल, width माइनस कॉलम डायमेंशन डिवाइड बाय 2। ओके, और बस उसके साथ आप ये करें तो आपके पास एम यू विल बी इक्वल टू क्यू यू इंटू के स्क्वेयर डिवाइड बाई 2। यहाँ पर बी लिखा है मगर मैं बी को इसलिए नहीं लेता बिकॉज बी इज 1 फुट। ओके,
अच्छा ये आप देखिए जरा, जो मैंने आपको बताया था, फॉर मशीनरी वॉल दिस विल बी somewhere to the interior side of the wall. ओके, तो आप उसमें देखें तो ये जो हमारे पास ये चीज है, ये डिस्टेंस, critical section will be somewhere inside the wall. So this thickness is t by 4. For example, thickness of wall is t, so this distance will be t by 4. तो अगेन वेरी सिंपल, आपके पास ये k है, k आप कैलकुलेट कर सकते हैं, प्लस t by 4 करें, सो दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस k प्लस t by 4। आपके पास में l हो जाएगा k प्लस t by 4। बात समझ में आ रही है? So QU multiply by this distance, which is k plus t by 4 into square divided by 2. This will give you a moment. इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। क्लियर है? यस सर। अच्छा, आप रिक्वायरमेंट आप जरा देखिए, रिक्वायरमेंट वही मिनिमम रिइंफोर्समेंट रिक्वायरमेंट इज 0.002 BH फॉर गेट 40, 0.0018 BH फॉर गेट 60। ओके, वेयर B is 12 inch and H is thickness of footing। ये तो मैंने आपको बताया, B will be 12 inch because you are designing it for 1 foot strip। ओके, मैक्सिमम स्पेसिंग की भी वही रिक्वायरमेंट है, आप देखें 3 inch are 18 inch for mains bars and 5 inch are 18 inch for temperature reinforcement। Clear cover, minimum 3 inch clear cover must be provided to protect the bars from corrosion। So basically we give the cover in each member to protect the reinforcement from corrosion। Okay, only one way shear or beam shear is significant in wall footing, hence critical shear is determined at critical section which is at a distance d from the face of the support। बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह आपने किया था सिम्पली सपोर्ट बीम के लिए, एट ए डिस्टेंस d आप शेयर कैलकुलेट करेंगे और इसको आप कंपेयर करेंगे शेयर कैपेसिटी के साथ। ओके, तो वो वही आपके पास मेथड है, आपके पास क्यू बेयरिंग प्रेशर है मल्टीप्लाइड बाई k माइनस t। ओके, ये आप देखिए दिस इज k और दिस इज एट डिस्टेंस d, तो बस k से आप d माइनस करें, तो आप इस लेंथ को अगर आप मल्टीप्लाई करें विथ क्यू यू विल गेट द शेयर एट दिस फेस। ओके, बात समझ में आ रही है? इसमें कोई क्वेश्चन है? एनी कंफ्यूजन? नो सर। ओके, शेयर कैपेसिटी वही आपके पास बीम शेयर कैपेसिटी आप देख सकते हैं 5 EC is 5 under root FC prime BD where B is unit width equal to 1 foot। okay, 5 EC should be equal to or greater than VU। if 5 EC is less than VU the depth of footing is increased instead of providing any shear reinforcement। तो हम क्या करते हैं नॉर्मली, इसमें हम शेयर स्ट्रिप वगैरह प्रोवाइड नहीं करते। आप अगर फॉर एग्जांपल इफ VU हम जिस तरह बीम में करते थे ना, इफ 5 EC इज लेस देन VU तो फिर हम क्या करते थे, हम स्ट्रिप प्रोवाइड करते थे। इसमें हम स्ट्रिप प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये बस आप याद रखें, समझ गए? इफ 5 EC इज ग्रेटर देन VU so your thickness is okay। if 5 EC is less than VU that is demand is greater than capacity तो फिर आप क्या करेंगे, you will increase the thickness of footing। बात समझ में आ रही है? you will not provide stirrups, you will increase the thickness of footing to increase the shear capacity। तो ये आपके पास डिजाइन स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1, एस्टिमेट ऑफ थिकनेस ऑफ फुटिंग H, assume thickness H of footing which must satisfy the shear requirement, minimum thickness of wall footing is changed, also find D। तो फर्स्ट स्टेप में आप H को assume करेंगे और आप इस तरह H को assume करेंगे such that it must satisfy the shear requirement। ओके,
और उससे आप डी कैलकुलेट करेंगे। स्टेप नंबर 2 में आप ये प्रेशर कैलकुलेट करें ओवर बर्डन विच इज कमिंग फ्रॉम वेट ऑफ कंक्रीट एंड वेट ऑफ फिल, ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3 में आप इफेक्टिव बेयरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करें, क्यू ई विल बी इक्वल टू क्यू ए माइनस डब्ल्यू, तो बिल्कुल सिंपल है। स्टेप नंबर 4 में कैलकुलेट बेयरिंग एरिया, तो दैट विल बी इक्वल टू ए रिक्वायर्ड सर्विस लोड डिवाइड बाय क्यू ई। फिर क्यू यू फाइंड करें विच इज फैक्टर लोड डिवाइड बाय बेयरिंग एरिया। स्टेप नंबर 6 में कैलकुलेट शेयर, तो इसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल शेयर को टू चेक द थिकनेस, ओके। आप यानी अगर आप इसको मोमेंट के लिए डिजाइन करें और फिर आप शेयर के लिए चेक करें, एंड इफ द शेयर डिमांड इज मोर देन द कैपेसिटी, तो फिर यू हैव टू इंक्रीज द थिकनेस एंड यू विल हैव टू रिवाइज द फ्लेक्चर डिजाइन आल्सो। तो दैट्स व्हाई first of all you will check the shear demand with the capacity. Shear demand आपने कैलकुलेट की, very simple, Q U K minus D, 5 EC is 5 2 if C prime B D, 5 EC shall be equal or greater than VU if 5 EC is less than increased thickness of footing, okay। फिर उसके बाद आप फ्लेक्चर के लिए डिजाइन करेंगे। अगर मेसिनरी वाल है तो फिर आप ये इक्वेशन यूज करेंगे, okay, K plus T by 4 because critical section will be at K plus T by 4, okay। and if it is a concrete wall तो फिर बस आप सिंपल ये यूज करेंगे Q U into K square by 2, और K तो मैंने आपको बता दिया था, K is very simple, width of footing minus thickness of wall divide by 2। स्टेप नंबर 9 कैलकुलेट एरिया ऑफ स्टील, तो वही ट्रायल एंड एरर से आप स्टील एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। मिनिमम रिइंफोर्समेंट चेक आप अप्लाई करें, so the calculated area must be greater than minimum reinforcement. If it is less than minimum reinforcement, so you will select the minimum reinforcement. Main bar spacing and maximum spacing check, वो भी आप देख सकते हैं। मेन बार स्पेसिंग आप ए बी एरिया बार डिवाइड बाय एस मल्टीप्लाई बाय 12 उससे कैलकुलेट करें। जिस तरह आप लोगों ने वन वे स्लैब डिजाइन किया था बिल्कुल वही प्रोसीजर है, ओके। और उसको 3 इंच एंड 18 इंच से चेक करें। डिस्ट्रीब्यूशन बार बिल्कुल वही आप देख सकते हैं, 0.0018 और 0.002 BH इज द मिनिमम रिइंफोर्समेंट, और इसकी जो स्पेसिंग है 5 इंच और 18 इंच उसके साथ करेंगे, ओके। स्टेप नंबर 13 ड्राफ्टिंग, तो फिर आप फाइनली इसको ड्राफ्ट करेंगे। ये आप एग्जांपल आप देखें तो इससे आपको समझ में आ जाएगी हाउ टू डिजाइन द वॉल फुटिंग, ओके। अच्छा, इसको आप देखें जरा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये टेक्स्ट को जरा देखें। ए 12 इंच थिक कंक्रीट वॉल, तो आपके पास थिकनेस ऑफ वॉल इज 12 इंच, दिस थिकनेस, this is 12 inch, okay, and the wall is concrete wall. So when the wall is concrete wall, so you can take K from the face of the wall, okay. Carries a service dead load of 10 kg per foot, service dead load हमारे पास 10 kg per foot है, and service live load is 12.5 kg per foot, okay। So total service load will be equal to 10 plus 12.5, so it will be equal to 22.5. This is the total service load, okay. And total ultimate load will be equal to 1.2 multiplied by 10 plus 1.6 multiplied by 12.5. The loads are acting at the base of the wall. The allowable bearing capacity QA is 5000 PSF. So 5 KSF or 5000 PSF. This is pound per square foot basically, okay. तो allowable जिस तरह मैंने आपको बताया था, allowable bearing capacity will be given to you, okay, at the level of the base of the footing. तो ये bearing capacity it is given at this level. तो जिस तरह मैंने आपको बताया था, you have to subtract the weight of fill from this.
which is 5 feet below the finished floor level. So you have placed the footing base at a depth of 5 feet from the finished floor level. This is Z. Z is equal to 5 feet. Design a wall footing using FC prime is equal to 3.5 KSI या 3500 PSI and Fy is equal to 60 KSI. The density of the soil is given, and it is 120 pound per square foot. Okay, so gamma soil is given to you. It is 120 pound per square foot, and gamma concrete, you know, gamma reinforced concrete is 150. Okay, so from this you can calculate the overburden pressure. Is note किया आप लोगों ने? ये आप लोगों ने नोट किया? यस सर। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे। ये डेटा बस सब डेटा गिवन है, एवरीथिंग इज गिवन टू यू। अब इसके बाद इसकी डिजाइन करेंगे, सही। अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम ट्रायल थिकनेस, यानी थिकनेस ऑफ, तो वी विल एज्यूम h is equal to 12 inch. Thickness of footing, there is h, it is assumed as 12 inch. Assuming number 6 bar for flexure, effective depth किस तरह कैलकुलेट करेंगे? D will be equal to 12 minus 3, 3 is clear cover, and minus half bar dia, क्योंकि आप देखें ना, ये आपके पास reinforcement है, समझ गए? So D will be from the centroid of this reinforcement up to this face. Okay, बात समझ में आ रही है ना? तो ये क्लियर डिस्टेंस इज 3 इंच, और उसके साथ आपने हाफ बार डाया भी ऐड करना है, सही। तो 12 माइनस 3 माइनस हाफ बार डाया, और हमने एज्यूम किया है कि वी आर यूजिंग नंबर 6 बार। ओके, तो 12 माइनस 3 माइनस हाफ इंटू 3/4, तो you will get D is equal to 8.62 inch. समझ में आ रही बात? ओके, थिकनेस भी कैलकुलेट किया, इफेक्टिव डेप्थ दी। नाउ कैलकुलेट द वेट ऑफ फिल एंड वेट ऑफ कंक्रीट। दैट इज वेरी सिंपल, 1 multiplied by 0.15, 1 is the thickness of footing and 0.15 is the unit weight of footing, क्योंकि I told you that 150 pound per square foot is the unit weight of concrete. So 0.15 KSF is the unit weight. Okay, plus this is equal to Z minus H. Okay, so 5 minus 1 multiplied by its unit weight. So unit weight is 0.12. It is 0.63 KSF. ये W समझ गए? Okay, now from this you can calculate the effective bearing capacity. So reliable bearing capacity is given to you, which is 5 KSF minus the bearing pressure or burden pressure is 0.63. अभी आपने कैलकुलेट किया 5 minus 0.63, so आपके पास effective bearing capacity is 4.37 KSF. A required is service load divided by QE. सर्विस लोड मैंने अभी आपको कैलकुलेट किया था, दिस इज 10 प्लस 12.5, तो 22.5 के पर फुट। A required is 22.5 divided by 4.37, so it is coming 5.15 foot square. अच्छा, अब आप देखिए यहाँ पर 5.15 मल्टीप्लाइड बाई 1, क्योंकि ये तो हम पर फुट कर रहे हैं ना, तो 5.15 मल्टीप्लाइड बाई 1, तो इसका मतलब ये तो 1 फुट है ना, और ये B मल्टीप्लाइड बाई दिस विल बी द टोटल एरिया। ओके, तो B इज बेसिकली 5.15
Okay, so for B is equal to 1 foot, we will select 5 feet 2 inch wide footing. हमने साइज ऑफ फुटिंग सिलेक्ट किया कितना 5 feet 2 inch. This size is equal to 5 feet 2 inch. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Now calculate design pressure or ultimate bearing pressure due to factored load. तो factored load फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैलकुलेट करेंगे 1.2 multiplied by 10 plus 1.6 multiplied by 12.5. This is 32 के. एरिया तो अब आपके पास गिवन है. It is 5.17 because 5 foot 2 inch will give you 5.17 feet. So 32 is the ultimate load divided by 5.17. So the bearing pressure, the ultimate bearing pressure is 6.19 ksf. You will design the footing for this bearing pressure, that is 6.19 ksf. यहाँ तक समझ में आ रही बात? कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं. अच्छा, अब इसको आप शेयर के लिए चेक करेंगे. वेरी सिंपल, वी यू इज इक्वल टू क्यू यू इंटू के माइनस डी. ये वन को बस आप छोड़े, क्यू यू इंटू के माइनस डी करें, क्योंकि यू नो दैट दी स्ट्रिप वेट इज 1 फुट. तो आप बस क्यू यू इंटू के माइनस डी डायरेक्ट करें. सही. क्यू यू इज 6.19, के इज 25 minus D is 8.62, basically is the D, and divide by 12. ये 25 किस तरह कैलकुलेट किया है? ये उन्होंने डायरेक्ट किया है, मगर मैंने आपको तरीका बताया. ये आप देख सकते हैं यहाँ पर चले गिवन है 25 इंच. ओके, आपके पास टोटल 5 feet 2 inch से मैंने आपको बताया था कि आप इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर आरसी वॉल, width of footing minus thickness of wall divide by 2. width of footing 5 feet 2 inch है, तो अगर आप इसको इंच में कन्वर्ट करें तो 62 इंच आ रहा है. thickness of wall कितना है? 12 inch. so this is 12 divide by 2. 62 minus 12 is how much? 50. 50 divided by 2, this is giving you 25 inch. So this is that K value 25. 25 minus 8.60. So K is 25 and D is 8.62. ये भी हमने कैलकुलेट किया था और इसको हमने 12 पर डिवाइड किया है टू कन्वर्ट इट इनटू फीट. ओके, इसमें मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट V इज इक्वल टू 8.45 के पर फुट. बेसिकली किप से पर फुट तो इसलिए हम करते हैं कि दिस इज फॉर 1 foot स्ट्रिप. ओके, अब 5EC कैलकुलेट करें. 5EC इज इक्वल टू वही तरीका है 0.752 if C prime B is taken 12 because 1 foot strip and D is 8.62 divided by 1000 करें. So 5EC is coming 9.18 के. तो आप देखें the thickness is sufficient or not. 12 inch thickness okay है कि नहीं? Okay, sir. Okay. So since 5EC is greater than U, the footing depth is okay. Otherwise, choose a new thickness and repeat the previous step. Using 12 inch thick and 5 feet 1 inch wide footing, अब हम क्या करेंगे? MU कैलकुलेट करें. MU इज वेरी सिंपल. QU आपने कैलकुलेट किया है, K भी कैलकुलेट किया है. K को बस आप 12 पर डिवाइड करें, 25 by 12, उसको फीट में कन्वर्ट करें, स्क्वायर डिवाइड बाय 2. सो MU इज कमिंग 13.43 फुट के पर फुट. इसको 12 में मल्टीप्लाई करें to convert it into inch के per foot. This is your
calculate area of steel. Very simple, वही AS is equal to mu divided by 5 FYD minus A by 2. Okay, A is equal to 0.2 inch या 0.2 D आप करें. AS is coming from trial and error. ये डायरेक्ट किया है, सही, क्योंकि अब आप लोगों को पता है कि हाउ टू calculate design enforcement using trial and error method. Okay, so AS is coming 0.359 inch square per foot. अच्छा, अगर हम नंबर 6 बार यूज करते हैं तो स्पेसिंग क्या होगी? इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ बार विच इज 0.44 डिवाइड बाई कैलकुलेटेड एरिया विच इज 0.359 and multiplied by 12. ओके, मगर उससे पहले आपने इसको मिनिमम रिइंफोर्समेंट के साथ कंपेयर करना है, बिकॉज इट इज ग्रेड 60 स्टील. सो 0.0018 बीच, 0.001812 is the unit strip, and this 12 is the thickness of the footing. It is coming 0.26 inch square. Your design reinforcement is greater than minimum, so you will use the design reinforcement. Okay, इसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करें. तो मैंने आपको बताया था, इफ यू आर यूजिंग फॉर एग्जांपल नंबर 5 बार, तो बार एरिया इज 0.31 डिवाइड बाय कैलकुलेटेड एरिया मल्टीप्लाई बाय 12, इट इज कमिंग 10.36. so instead of 10.36 we will provide 9 inch center to center conservatively. Okay, मैंने आपको बताया था कि आपके पास बार फॉर एग्जांपल आ रहा है 10.36 नंबर ऑफ बार, तो आप उसकी जगह 11 बार यूज करते हैं कंजर्वेटिवली, बिकॉज 11 बार विल गिव यू मोर एरिया. मगर स्पेसिंग को आप कम करते हैं. instead of 10.36 we are using 9 inch center to center, because 9 inch center to center spacing will give you more reinforcement area. Okay, maximum spacing is 3 inch or 18 inch. तो ये आप जरा करें, 18 inch is governing, 9 inch is less than 18 inch. so okay, distribution reinforcement वही है, आप लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था. इट इज कमिंग. अच्छा, अब इसमें अगर आप देखें, इसमें उन्होंने ये ओरिजिनल ये जो विड्थ था फुटिंग, ये इसको यूज किया है. देखिए आपके पास ये फुटिंग है ना, मैं इसको फॉर एग्जांपल 3D में ड्रा कर देता हूँ, सही. तो इस डायरेक्शन में तो आपने कैलकुलेट किया और आपने ये जो डिस्टेंस था वो आपने 1 फुट लिया था. ये पॉइंट जरा समझे, सही. अब आप और ये रिइंफोर्समेंट आप इस डायरेक्शन में, शार्ट डायरेक्शन में देते हैं. अब आप जब लॉन्गिट्यूडनल रिइंफोर्समेंट देते हैं तो उसके लिए आपके पास विड्थ इज दिस वन. तो बस आप उस टोटल विड्थ को ले लें. ये ऑलरेडी हमने सेलेक्ट किया है 5 फीट 2 इंच. तो बस इससे आप जिस तरह बीम के लिए करते हैं टोटल एरिया कैलकुलेट करेंगे और उससे नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट करेंगे. या अगर आप इस तरह नहीं करते तो इसको भी आप उसी तरीके से b इज इक्वल टू 12 इंच ले सकते हैं और उसके लिए स्पेसिंग कैलकुलेट करें. बात समझ में आ रही है? यहाँ पर उन्होंने टोटल वेट लिया है 0.0018 इंटू 62. 62 is the total width of footing. It is coming from 5 feet 2 inch. 12 5s are 60 and plus 2, so 62 inch. Okay, multiply by 12. So the total area is coming 1.34 inch square. तो इससे आप नंबर ऑफ बार कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर ऑफ बार्स, area divided by area of bar. So area is 1.34, area of bar 0.31, 4.32 is coming. So 5 bars आप प्रोवाइड करें इन द लॉन्गर डायरेक्शन. बात समझ में आ रही है? तो इन्होंने डायरेक्ट नंबर ऑफ बार्स कैलकुलेट किए. अगर आप स्पेसिंग ऑफ बार्स कैलकुलेट करना चाहते हैं, ओके, तो फिर आप बी की जगह यहाँ पर 12 इंच लगाए, पर फुट कैलकुलेट करें, तो फिर उससे आपके पास बार स्पेसिंग आ जाएगी. मगर सिंस द विड्थ ऑफ फुटिंग इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ फुटिंग, तो आप डायरेक्ट ये विड्थ भी आप यूज कर सकते हैं. समझ गए?
तो दिस इज द फाइनल ड्राफ्टिंग। आप इसमें ज़रा देखें, इसी तरह आप क्लियरली इसको ड्राफ्ट करेंगे। ये थिकनेस ऑफ फुटिंग है, 3 inch is usually PCC given below the footing. 5 feet 2 inch is the width of footing, and 5 feet 8 inch is the width of PCC. ये अगर पीसी आप नहीं भी देते तो कोई बात नहीं है। 5 feet is the footing depth. अब आप देखें, दिस इज द मेन बार, नंबर 5 at 9 inch, 3 inch clear cover on all side, ये भी मेंशन किया है। and these are those 5 bars, 5 bars which are given in the longer direction। टेम्परेचर reinforcement है ये सब। इसमें कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शाबाश। This is a class activity, but you have to design it. You should take it as a home activity, okay? कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, वरना फिर हम आइसोलेटेड फुटिंग स्टार्ट करते हैं। सर ये एरिया रिक्वायर्ड पे थोड़ा सा समझा। एरिया रिक्वायर्ड, अच्छा, यस सर। दैट इज वेरी सिंपल। आपके पास ये लोड है, सर्विस लोड, ओके, और बेरिंग कैपेसिटी QA will be given to you. This will be given. That is the strength of soil. Strength of soil will be given to you, okay? Bearing capacity is basically the strength of soil. आप उससे क्या करेंगे, उससे आप इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी कैलकुलेट करेंगे, ओके? ओके सर। अच्छा, वंस यू कैलकुलेट द इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी, इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी आप इसलिए कैलकुलेट करेंगे कि आपके पास ये जो क्यू एलाइबल है, इट इज गिवन एट दिस लोकेशन QA। तो आप क्या करेंगे, ये जो वेट है ऑफ फिल फ्रॉम हेयर अप टू दिस, उसमें वेट ऑफ साइल भी है, और इट इज बेसिकली इंसर्टिंग द बेरिंग प्रेशर ऑन दिस लेवल। तो वो बेरिंग प्रेशर आप इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो फ्रॉम दैट यू विल गेट द इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी, दैट इज द अवेलेबल बेरिंग कैपेसिटी। इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी और अवेलेबल बेरिंग कैपेसिटी एट दिस सरफेस। तो मैंने आपको बताया दैट इज वेरी सिंपल कि आप गेमा ऑफ साइल मल्टीप्लाइड बाय थिकनेस ऑफ साइल, थिकनेस ऑफ साइल आप कैलकुलेट कर सकते हैं फ्रॉम Z माइनस H, ओके, और प्लस ये W की मैं बात कर रहा हूं, QA माइनस गेम ऑफ कंक्रीट मल्टीप्लाइड बाय H ऑफ कंक्रीट, थिकनेस ऑफ फुटिंग, ओके। इससे आप ये माइनस करें, यू विल गेट द इफेक्टिव बेरिंग कैपेसिटी। यहां तक समझ गए? यस सर। अच्छा, अब ए रिक्वायर्ड, अब आप देखिए जरा, ए रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, अच्छा, ये इसकी जो यूनिट है, इट विल बी इन पाउंड पर स्क्वायर फुट और किप पर स्क्वायर फुट, ओके। और इसकी यूनिट इट विल बी इन पाउंड और इन किप, ओके, यूजुअली इन किप। आप इसको भी किप में ले सकते हैं, किप पर स्क्वायर फुट। तो ए रिक्वायर विल बी इक्वल टू, अब आप देखिए जरा, टोटल सर्विस लोड डिवाइड बाय क्यू इफेक्टिव। तो अब आप इसमें देखिए ना, दिस यूनिट इज इन किप एंड दिस इज इन किप पर स्क्वायर फुट, समझ में आ रही है? तो किप के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये स्क्वायर फुट में आपके पास आ जाएगी। बात आप समझ गए अब? यस सर, समझ गए। अच्छा, आप इसको डायरेक्ट बी भी ले सकते हैं, दिस इज बेसिकली बी, क्योंकि आपके पास दिस रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू बेसिकली बी मल्टीप्लाइड बाई 1, दिस इज इक्वल टू द रिक्वायर्ड एरिया।
क्योंकि आप तो पर फुट डिजाइन करते हैं ना, आप वन स्ट्रिप फुट स्ट्रिप विड्थ आप 1 फुट लेते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं? यस सर, बिल्कुल। तो आप डायरेक्ट बस इसको दिस एरिया रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, क्योंकि आप अगर इसको 1 पर डिवाइड भी करें, बिकॉज अगर आप बी को फाइंड करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू ए रिक्वायर्ड डिवाइड बाई 1। तो 1 पे डिवाइड करने से तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो आप बी को डायरेक्ट ए रिक्वायर्ड ले सकते हैं। समझ गए? यस सर, अभी समझ गए, थैंक यू सर। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, शाबाश। कोई क्वेश्चन है? एनी क्वेश्चन? चले बस फिर आगे जाते हैं। सही, आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग। अब इसमें अगर आप देखें, इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग आर जनरली स्क्वायर इन प्लेन, रेक्टेंगुलर शेप्स आर समटाइम यूज वेयर डायमेंशन लिमिटेशन एग्जिस्ट। तो नॉर्मली आइसोलेटेड फुटिंग आर स्क्वायर फुटिंग, ये दोनों डायमेंशन बराबर होते हैं, दे आर स्क्वायर फुटिंग। Sometimes we also give rectangular footing due to dimension limitations. The isolated footing is a slab that directly supports a column. तो इसकी जो action है, this will be two-way action. Isolated footing display essentially two-way dimensional action cantilevering out on both orthogonal sides of the column. बात समझ में आ रही है ना? It will bend in this direction as well as in this direction. So there's two-way action. But since it is a cantilever, it is cantilever action, तो बस आप इसको एज ए बीम डिजाइन कर सकते हैं। दैट इज वेरी सिंपल, बिल्कुल वही तरीका है, इसमें कोई और नहीं है। इसमें एडिशनली आपने सिर्फ पंचिंग शेयर को भी चेक करना है, ये बस आप याद रखें। अब हम करेंगे आगे। सही, बीम शेयर के साथ साथ आप इसमें पंचिंग शेयर भी आप इसमें चेक करेंगे, बिकॉज पंचिंग शेयर विल बी देयर इन two-way action. Punching shear is a two-way action. So where there is two-way action, there will be punching shear. Okay. The footing is loaded on in upward direction by the soil pressure. Tensile stresses are induced in each direction. Bottom. बिल्कुल वही आप देख सकते हैं, कोई इसमें फर्क नहीं है। इसमें भी आप देखें, tensile stresses there will be ultimate bearing pressure in the upward direction and tensile stress will be produced in the lower direction. इसमें बस ये डी में फर्क ये है कि अब आपके पास जो डी होगा, इसको अगर आप देखें, ये पॉइंट जरा नोट करते जाए। सही, जो डिफरेंसेस है मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, बाकी सब प्रोसीजर वही है। ये आपके पास अब फुटिंग है, ये रिइंफोर्समेंट है गिवन इन बोथ डायरेक्शन। अच्छा, अब अगर आप देखें तो रिइंफोर्समेंट गिवन इन बोथ डायरेक्शन, बोथ आर मेन रिइंफोर्समेंट, ये भी मेन रिइंफोर्समेंट है और ये भी मेन रिइंफोर्समेंट है। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दिस इज टू वे एक्शन। अगर आपको याद हो, फुटिंग के केस में दिस रिइंफोर्समेंट वाज मेन रिइंफोर्समेंट given the shorter direction and reinforcement in the other direction was temperature reinforcement, this was not main reinforcement। तो हमने कैलकुलेट किया था डी किस तरह, डी हमने कैलकुलेट किया था H माइनस क्लियर कवर माइनस हाफ डाया ऑफ मेन रिइंफोर्समेंट, इस तरह। अब इस केस में both of these bars are main reinforcement, so we will take D average center of these two. Okay, so D average will be taken for the design। तो उसमें हम D, इस केस में D किस तरह कैलकुलेट करेंगे, D will be equal to H minus 3 minus
1 dia, half dia नहीं, full dia of bar. This will be your D average. बात समझ में आ रही है? ये पॉइंट समझ गए? जो जो डिफरेंसेस है बिटवीन आइसोलेटेड फुटिंग एंड वॉल फुटिंग, वही मैं हाईलाइट कर रहा हूं। बाकी प्रोसीजर वही है कि किस तरह आप एरिया कैलकुलेट करेंगे, किस तरह आप बेयरिंग प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, ये बिल्कुल वही प्रोसीजर है जिस तरह हमने वॉल फुटिंग के लिए किया। मगर यहाँ पर ये जो डिफरेंसेस है मैं आपको बता रहा हूँ। इस केस में सिंस रिइंफोर्समेंट गिवन इन बोथ डायरेक्शन इज मेन रिइंफोर्समेंट, क्योंकि दिस टू वे एक्शन, बेंडिंग विल बी इन बोथ डायरेक्शन, so therefore the we will calculate the D average. ये बात समझ गए कि नहीं? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? सर अगर हमारे Yes, sir. पास ये जी वाई सर अगर हमारे पास ये बार की जो मतलब हमने डिफरेंट बार यूज किया हूँ, हाँ, मेन बार दूसरा बार नंबर यूज किया और श्रिंकेज में हमने दूसरा यूज किया, तो फिर डी कौन सा लेंगे? आप इस तरह ले करेंगे कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम रिकमेंड ये करते हैं कि आप एक ही बार डाया यूज करें, आप डिफरेंट बार डाया यूज ना करें, क्योंकि बोथ आर मेन रिइंफोर्समेंट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? इसमें आप देखिए जरा, ये जो रिइंफोर्समेंट आपको नजर आ रही है डॉटेड, ये भी मेन रिइंफोर्समेंट है। दिस इज नॉट, अगर आप देखिए इसमें दिस इज स्क्वायर फुटिंग, स्क्वायर फुटिंग है कि नहीं, और बेंडिंग भी सेम है इन बोथ डायरेक्शन। तो आप बताइए व्हाई यू विल टेक डिफरेंट बार डाया इन द अदर डायरेक्शन? कोई रीजन है आपके पास? क्योंकि दिस इज ए स्क्वायर फुटिंग और डिमांड भी सेम है बोथ डायरेक्शन में, तो यू विल यूज वन बार डाया इन बोथ डायरेक्शन। बस इसलिए तो हम डी एवरेज लेते हैं। डी एवरेज तो हम लेते हैं इसलिए कि बोथ the reinforcement given in both direction is main reinforcement, okay, it will be of same dia, of same spacing. बात समझ में आ रही है? सर ये तो स्क्वायर के लिए सही है, अगर हमारे पास कोई एरिया रिस्ट्रिक्शन हो, हमने फिर रेक्टेंगुलर यूज किया, तो उसमें तो हमारे पास हाँ, मूवमेंट की वैल्यू हाँ बिल्कुल उसमें आपके पास जो मिनिमम जिससे आता है बस आप वो डी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये डाया है तो बस आप हाफ डाया, ये अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल नंबर 3 बार है, ठीक है, और ये नंबर 4 बार है, तो बस ठीक है आप नंबर 4 डाया को माइनस करें, डी विल बी स्मॉल बट दैट विल बी कंजर्वेटिव। मतलब ये फाइनली कहने का कि आप जो भी बार डाया हो बस आप वन डाया बार उससे माइनस करें, दैट विल बी योर डी एवरेज। ओके, इतना ओके स्मॉल सर। डिफरेंस विल नॉट मैटर। और कोई क्वेश्चन है? सर इसमें हम वो डी उस फार्मूले से नहीं कर सकते, A1 D1 प्लस A2 D2 डिवाइड बाई 1 प्लस A2, उससे नहीं कर नहीं, सकते बस नहीं उसकी जरूरत ही नहीं है। मैंने कहा दिस इज ये जो आप लोग जो केस की बात करें, अगर बार डाया सेम है तो उसके लिए तो A1 D1 की जरूरत ही नहीं है, ये तो समझ रहे हैं ना? जी बार जी डाया, आप डिफरेंट बार डाया की बात कर रहे हैं ना? यस सर। हाँ, तो डिफरेंट बार डाया के लिए द डिफरेंस विल बी वेरी स्मॉल, तो उसकी जरूरत ही नहीं है A1 D1 की। सही, ओके सर। दो द एग्जैक्ट मेथड इज दैट वन कि आप A1 D1 से फाइंड करें, मगर वो डिफरेंस इतना नहीं होगा। सही, ओके सर। और कोई क्वेश्चन है? तो ये आप देखते जाएं, मेन डिफरेंसेस आप जरा नोट करें बिटवीन द डिजाइन ऑफ फुटिंग एंड डिजाइन ऑफ वॉल फुटिंग एंड डिजाइन ऑफ कॉलम फुटिंग। तो एक डिफरेंस तो मैंने आपको बताया कि आप डी की बजाय आप यूज करेंगे डी एवरेज, बिकॉज reinforcement given in both direction is now main reinforcement. देखिए बोथ आप देख सकते हैं, ये भी मेन reinforcement है, ये भी मेन reinforcement. A split footing will typically have reinforcement in two orthogonal direction at the bottom of the footing for flexure. बाकी बिल्कुल वही प्रोसीजर आप देखें, बेयरिंग एरिया इज इक्वल टू
सर्विस लोड डिवाइड बाई क्यू इफेक्टिव। ओके, ये आप कैलकुलेट करें, उससे आप बी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एरिया डिवाइड बाई एल। ओके, या अगर स्क्वायर हो तो बस उसके लिए तो जरूरत ही नहीं है एल की, समझ गए। ये तब जब आपके पास रेक्टेंगुलर फुटिंग हो। अगर स्क्वायर हो तो फिर तो ये भी बी होगा और ये भी होगा, तो बस आप ए रिक्वायर्ड एरिया की बस आप स्क्वायर रूट ले ले, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ बी। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखिए आपके पास ए रिक्वायर्ड है ना, ए रिक्वायर्ड इज कमिंग फॉर एग्जांपल 36 foot square, and if it is isolated footing, okay, so isolated footing, if it is square isolated footing, so this will be equal to b multiplied by b is equal to 36। तो आप b फॉर एग्जांपल एज्यूम करते हैं 6 feet, तो b will be equal to 36 by 6, it will also give you 6। या आप इस तरह करें कि b कैलकुलेट करें, 36 स्क्वायर रूट ले लें, it will give you b is equal to 6 feet। अगर आपके पास रेक्टेंगुलर फुटिंग हो तो फिर a is equal to 36 foot square। सही है। लेंथ गिवन है फॉर एग्जांपल इट इज 9 feet। ओके, तो उससे आप b कैलकुलेट कर सकते हैं, b विल बी इक्वल टू 36 डिवाइड बाई 9, so this will be equal to 4 feet। उस केस में आप डायरेक्ट ए रिक्वायर्ड को बी ले सकते थे, दिस इज अनदर डिफरेंस। ओके, क्योंकि उसमें हमें पता था कि द स्ट्रिप विड्थ इज 1 feet। ओके, मगर इस केस में आपने इस तरीके से करना है, सही। फिर क्यू यू इज इक्वल टू फैक्टर लोड डिवाइड बाई एरिया, ये बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल वही सेम प्रोसीजर। द मैक्सिमम फैक्टर मोमेंट इज कैलकुलेटेड क्रिटिकल सेक्शन, बिल्कुल वही तरीका है। आप देखें k इज इक्वल टू बी माइनस सी बाई 2, दिस इज टोटल b माइनस सी डिवाइड बाई 2। अब यहां पर b की जरूरत है, यू विल मल्टीप्लाई b। उस केस में मैंने आपको बताया था कि आप डायरेक्ट क्यू यू के स्क्वायर बाई 2 करें, क्योंकि वी नो दैट द डिजाइन इज पर फुट। ओके, बट इस केस में आप पर फुट डिजाइन नहीं, इसमें भी आप पर फुट भी कर सकते हैं, यानी आप b को 12 इंच भी ले सकते हैं या 1 feet, तो इसमें भी आप क्यू यू के स्क्वायर बाई 2 कर सकते हैं इफ यू वांट टू कैलकुलेट द स्पेसिंग। मगर आप बार्स, टोटल बार्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इफ यू मल्टीप्लाई इट विद द विड्थ ऑफ फुटिंग। ओके, मिनिमम रिक्वायरमेंट। अच्छा, अब ये जरा देखें, ये दिस इज अनदर डिफरेंस। ACI code minimum reinforcement required for isolated footing is same as for wall footing. However, many designers recommend to use beam minimum reinforcement for isolated column footing as follow। ये आप देखें जरा, this is beam, the minimum reinforcement for beam। याद है आप लोगों को 0.005 B into D average for gate 40 and 0.0033 BD average for gate 60। So minimum reinforcement used for beams will be used for the isolated footing, क्योंकि इसमें कोई redundancy नहीं होती, so that is why beam minimum reinforcement equations are used for the isolated footing। और आप आगे देखेंगे most of the time in 90% cases this minimum reinforcement will govern। आपकी calculated reinforcement in maximum cases will come less than the minimum reinforcement, आप आगे देखेंगे। ओके, ये बात आप याद रखें, in most of the cases your minimum reinforcement will govern। ओके, maximum spacing requirement वही है 3 inch or 18 inch। The footing dip is generally established by the shear requirement, वही
मैंने आपको बताया था, तो ये आपके पास दिस इज ए न्यू टर्म. द फुटिंग इज सब्जेक्टेड टू टू वे एक्शन. द टू वे shear is commonly termed as punching shear. Since the column or pedestal tends to punch through the footing, therefore punching shear will be a problem in this type of footing. Beam shear is not usually a problem in isolated footing. तो बस अगर if for example it satisfies the punching shear requirement, so beam shear capacity will already be satisfied. Okay, so to uh, confirm the thickness or the depth of footing, you will compare the punching shear demand with the punching shear capacity. How to calculate the punching shear demand and punching shear capacity, ये आगे आ रहे हैं. इसमें आप जरा देखें, ये एनिमेशन आप देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट एनिमेशन है. आप देखें, it will punch in this way in the footing. Okay, अच्छा ये डिस्टेंसेस कितने हैं? दिस इज d/2. अगर आपको याद हो, क्रिटिकल shear इन केस ऑफ बीम इट वाज एट d. सही. तो इसी तरीके से आपके पास ये जो क्रिटिकल पंचिंग shear पैरामीटर है, it will be at a distance of d/2. The critical section of this two-way shear is taken at d/2 from the face of the column, जो मैंने आपको बता दिया. सही, ये आप देख सकते हैं. तो वेरी सिंपल, अगर आपके पास ये d/2 है ऑन ईच साइड, तो इससे आप ये पंचिंग पैरामीटर भी कैलकुलेट कर सकते हैं, which is b0. b0 will be equal to this distance will be equal to, अगर आप देखें ये वन साइड, this will be equal to column dimension plus d/2 plus d/2. so total कितना हुआ? c plus d. so c plus d is one side, and since this is on all four side, तो इसको आप 4 में मल्टीप्लाई करें, तो दिस इज योर पंचिंग पैरामीटर. ओके, यहाँ गया भी रहा है. यहाँ पर आप देखें जरा, दिस इज d average by 2 एंड दिस इज d average by 2. ओके, अगर आप इसकी एक साइड को करें तो इट विल बी इक्वल टू c plus d average by 2 plus d average by 2, so it will be equal to c d average. अगर इसकी आप एरिया फाइंड करना चाहते हैं, दिस एरिया पंचिंग shear एरिया, तो दिस विल बी इक्वल टू c plus d ज़रब c plus d, so it will be equal to c plus d average square. बात समझ रहे हैं? So the punching shear demand at critical section, ये जरा आप नोट करें अब, this will be equal to QU into B square. This is the total punching shear demand, QU into B square, यानी QU into area minus QU at the punching shear, at the punching shear area, applied at the punching shear area. So that is basically C plus D average square. बात समझ में आ रही है? इस तरह अगर आपको याद हो, हम VU फाइंड करते थे ना, it was QU into K minus D, या अगर आप इसको एक्सपेंड करें, it is QUK total shear minus QU applied at a distance D.
but that was one way action. इस केस में हमारे पास since it is applied on the area, so this is equal to QU into B square minus QU into C plus D average whole square. ये बात समझ में आ गई कि नहीं? Punching shear demand is equal to QU B square at critical distance, okay? Because QU B square is the total punching shear demand. But at critical section, if you want to calculate the punching shear demand, so you have to subtract this area from the total area. बात समझ में आ रही है? तो this total area is B square minus this area is C plus D average square. इसको आप QU में multiply करें, so this will be the punching shear demand at critical section, at this section, okay? ये पॉइंट समझ में आ गई कि नहीं? इसमें कोई क्वेश्चन है? आवाज मेरी आ रही है? यस सर, आ रही है। अच्छा, ये क्लियर है ना? सर ये लास्ट में जो ये किया, ये जरा दोबारा कर दें। अच्छा, क्या आप स्पेसिफिकली बताया ना? सर ये जो फार्मूले में आपने कहा ना क्यू यू इंटू बी स्क्वायर माइनस सी प्लस डी एवरेज से हाँ, क्रिटिकल वाला एरिया। देखिए बिल्कुल सिंपल है। टोटल पंचिंग, ये आप जरा देखिए, ये आपके पास एरिया जो ग्रीन एरिया नजर आ रहे हैं? यस सर। अच्छा, इसको क्यू यू में मल्टीप्लाई करें, क्योंकि आपके पास क्यू यू इज इन किप पर स्क्वायर फुट। इस तरह है कि नहीं? यस सर। इसको आप टोटल एरिया में मल्टीप्लाई करें, तो दिस विल बी बेसिकली योर टोटल पंचिंग शेयर डिमांड। बात समझ में आ रही है? दिस विल गिव यू इन वैल्यू इन किप। This is total punching shear demand coming on the column or inserted by the column. यहां तक समझ गए? यस सर। अच्छा, जिस तरह अगर आपको याद हो बीम के केस में, I told you that you can calculate the shear at a distance d to economize the design. तो इसी तरीके से since we know that it will punch at this perimeter, okay, तो ये जो shaded area है, this will be directly taken by the column, okay, it will not be punch out, it will be punch out at this perimeter. तो हम ये जो एरिया है इसको हम माइनस कर सकते हैं इसमें से। तो हम क्या करते हैं, दिस इज क्यू यू मल्टीप्लाइड बाई टोटल एरिया इज हाउ मच, बी स्क्वायर माइनस व्हाट इज दिस पंचिंग एरिया। तो मैंने आपको बताया कि ये जो एक साइड है, दिस साइड इज बेसिकली सी प्लस डी एवरेज, क्योंकि आप देखिए इसमें ये जो डी एवरेज बाई 2 है, इट इज फ्रॉम द फेस ऑफ द कॉलम। सो मैं इसको फॉर एग्जांपल यहाँ पर ड्रा कर देता हूं तो आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ये आपके पास है कॉलम, ये जो डिस्टेंस है दिस इज डी एवरेज बाई 2, चले मैं डी कर देता हूं, सही, एंड दिस इज आल्सो डी बाई 2, डी का मतलब डी एवरेज है, सही। ये डायमेंशन जो कॉलम का है दिस इज सी। तो अब आप बता सकते हैं कि व्हाट इज दिस साइड, ये साइड किसके बराबर होगा, सी प्लस डी। सी प्लस डी। तो सी प्लस डी इज वन साइड। तो अगर आप इसकी एरिया निकालना चाहते हैं, दिस टोटल एरिया, तो सी प्लस डी होल स्क्वायर होगा कि नहीं? यस सर। तो वो जो एरिया है वो हम इससे माइनस करेंगे टोटल से, टू कैलकुलेट द पंचिंग शेयर डिमांड एट दिस सेक्शन ए, ओके। तो B माइनस C प्लस D एवरेज आर डी होल स्क्वायर, ये एरिया इससे माइनस करें और Q में मल्टीप्लाई करें, दिस विल बी द पंचिंग शेयर डिमांड
at the critical perimeter. अब बात समझ में आ रही है? यस सर, अब समझ गए। अच्छा, ये पंचिंग शेयर डिमांड अगर आप कैलकुलेट करें तो फिर आप इसको कंपेयर करेंगे पंचिंग शेयर कैपेसिटी के साथ। दैट इज आल्सो न्यू फॉर यू एंड द इक्वेशन फॉर पंचिंग शेयर कैपेसिटी इज आल्सो वेरी सिंपल। आप देखें 5 FC प्राइम B नॉट इंटू D एवरेज, बिल्कुल जिस तरह 5 FC प्राइम B D हमने किया था। द ओनली डिफरेंस इज दिस इज B नॉट, दिस इज नॉट B नॉट इज द पंचिंग शेयर पैरामीटर। तो ऑलरेडी मैंने आपको कैलकुलेट किया है, ये पंचिंग शेयर पैरामीटर विल बी 4 into C plus D एवरेज। इस तरह होगा कि नहीं? पैरामीटर की मैं बात कर रहा हूँ। यस सर। सही है, तो ये B नॉट आप उसमें बस कैलकुलेट करेंगे, बाकी C प्राइम की वैल्यू भी गिवन है, D एवरेज भी गिवन है, तो इससे आप पंचिंग शेयर कैपेसिटी फाइंड करेंगे। इफ पंचिंग शेयर कैपेसिटी इज ग्रेटर देन पंचिंग शेयर डिमांड व्हिच यू हैव कैलकुलेटेड हियर, तो the thickness is okay. If the punching shear capacity is less than the demand, so then you have to increase the thickness. अब बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, तो ये आप देखें 5 VCP should be equal to or greater than VU. If 5 VC is less than VU, the depth of footing is increased instead of providing any shear reinforcement. तो वही मैंने जिस तरह को footing में आप shear reinforcement provide नहीं करते, so the only way to increase the shear capacity is to increase the thickness. Steps आप देखें, जो डिफरेंसेस थे वो मैंने आपको बता दिए कि कहाँ पर डिफरेंसेस है। बाकी आप देखें तकरीबन स्टेप्स वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल एज्यूम थिकनेस ऑफ फुटिंग, ओके। ओवरबर्डन प्रेशर कैलकुलेट करें, क्यू इफेक्टिव कैलकुलेट करें, ए रिक्वायर्ड निकालें और इससे बी निकालें, सही। फिर क्रिटिकल पैरामीटर C plus D एवरेज उससे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। QU आप कैलकुलेट करें, फैक्टर डिवाइड बाय बेयरिंग एरिया। पंचिंग शेयर डिमांड कैलकुलेट करें, अभी हमने कैलकुलेट किया, सही। पंचिंग शेयर कैपेसिटी कैलकुलेट किए करें यूजिंग दिस इक्वेशन B नॉट आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया है। इफ 5 VC इज ग्रेटर देन VU तो बस थिकनेस इज ओके, otherwise increase the thickness. Once you select the thickness, finally select the thickness of footing, then you have to design it for the moment flexure, okay. This will be equal to QU into BK square by 2. I told you that you can take this B is equal to 1 feet, okay. If you want to calculate the spacing, बात समझ में आ रही है? मगर इस केस में आप नंबर अब्बास कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बस आप B को यहाँ पर रखें, K इज इक्वल टू B माइनस C बाई 2, ये मैंने आपको ऑलरेडी किया है। ट्रायल एंड एरर से एस कैलकुलेट करें। एस मिनिमम आप देखें ग्रेड 40 के लिए 0.005 BD एवरेज है और इसके लिए 0.003 है। बार प्लेसमेंट ड्राफ्टिंग, ये आप इसमें एग्जांपल जरा देखें। ए कॉलम 18 इंच स्क्वायर, तो कॉलम की डायमेंशन क्या है? C इज इक्वल टू 18 इंच with FC prime 3 KSI reinforced with 8 number 8 bars. कॉलम में बार्स जो है दे आर 8 number 8। आपके पास 18 इंच बाई 18 इंच कॉलम है और उसमें बार्स कितने हैं? 8 number 8, यानी ये आपके पास कॉलम है। दिस इज योर कॉलम, ओके। दिस 18 बाई 18 इंच कॉलम और ये जो बार्स है दीज आर 8 number 8। If Y40 KSIS supports a service load of 81.87 kb,
तो सर्विस लोड भी टोटल गिवन है और फैक्टर लोड भी गिवन है 103.17। बात समझ में आ रही है? डायरेक्ट आपको सर्विस लोड दिया है और डायरेक्ट फैक्टर लोड भी दिया है, यानी ये PS है एंड दिस इज PU. The load is acting at the base of the column. The allowable soil pressure at the level of the base of the column footing is 2.2 kb per square foot. Okay, तो यहाँ पर allowable pressure given है and that is equal to 2.204. Normally the bearing capacity is given in ton per square foot. तो अगर आप इसको टन में कैलकुलेट करें तो दिस इज 1 टन पर स्क्वायर फुट बेरिंग कैपेसिटी। ओके, डिजाइन ए स्क्वायर फुटिंग विद बेस 5 फीट बिलो सरफेस, तो वही डेप्थ है जो हमने वॉल फुटिंग के लिए पढ़ा था, Z इज 5 फीट। टेक यूनिट वेट ऑफ साइल इज 100 PCF पाउंड पर क्यूबिक फुट। तो साइल की जो यूनिट वेट है इस केस में इट इज वीकर साइल and the unit weight is 100 pound per cubic foot. अब आप आए जरा, कॉलम साइज 18 बाई 18 इंच है, FC प्राइम 3 है, FY 40 है, QA 2.204 है, फैक्टर्ड लोड ऑन कॉलम 103, सर्विस लोड ऑन कॉलम 81. ओके, assume H, for example we assume H is equal to 15 इंच। डी एवरेज इससे कैलकुलेट करें, मैंने आपको बताया H माइनस क्लियर कर माइनस 1 बार डाया, तो अब नंबर 8 बार के लिए हम फॉर एग्जांपल करते हैं, तो 15 माइनस 3 माइनस 1, तो 11 इंच इज योर इफेक्टिव डेप्थ डी एवरेज। ओके, कैलकुलेट ओवरबर्डन प्रेशर W, दैट इज वेरी सिंपल, gamma fill which is 100 multiplied by 5 minus 15 inch is the thickness of footing, so 15 by 12 is 1.25 plus 150 is weight of concrete unit weight multiplied by thickness of concrete which is 1.25, so 562.5 psif which is basically 0.5625 ksif. This is the overburden pressure. You have to subtract this from the allowable bearing pressure, bearing capacity, to get the value of the effective bearing capacity. So effective bearing capacity is equal to QA minus W, 2.2 minus this, so it is coming 1.642 ksif. This is your effective bearing capacity. Calculate the bearing area, so that is very simple, service load given है और QE आपने अभी कैलकुलेट किया, सर्विस लोड डिवाइड बाय QE, तो दिस इज 49.86 फुट। इसकी आप स्क्वायर रूट ले लें क्योंकि स्क्वायर फुटिंग है, या आप B मल्टीप्लाई बाय B करें, B को 7 एज्यूम करें तो आपके पास B फाइनली विल बी 7 फीट, या इसकी आप स्क्वायर रूट ले लें तो बस इट विल गिव यू 7 फीट विड्थ। ओके, यहाँ तक समझ में आ रही है बात? यस सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? नहीं। ओके, ये आप देखिए जरा, क्रिटिकल पैरामीटर वेरी सिंपल, 4 इंटू सी प्लस डी एवरेज। सी हमारे पास है 18 इंच साइज ऑफ कॉलम, डी एवरेज अभी ने कैलकुलेट किया 11, 4 में मल्टीप्लाई करें, दिस इज योर क्रिटिकल पैरामीटर। कैलकुलेट डिजाइन प्रेशर ऑन बेस, दैट इज वेरी सिंपल, design pressure or ultimate bearing pressure is equal to factored load, it is given to you, it is 103, divided by given area, so the given area is 7 multiplied by 7, because 7 by 7 is your footing width, so it is coming 2.105 ksif। यहाँ पर आपने याद रखना है कि आपने यहाँ पर फैक्टर लोड डिवाइड बाय गिवन एरिया, बात समझ में आ रही है?
अगर आप फॉर एग्जाम्पल सिलेक्ट करते हैं 8 बाई 8 फीट इंस्टेड ऑफ 7 फीट, आप फुटिंग देते हैं 8 बाई 8 फीट, तो फिर आपने यहाँ पर एरिया 8 मल्टीप्लाई बाई 8 64 फीट स्क्वायर ये पुट करना है, समझ गए? दिस एरिया इज बेसिकली द प्रोवाइडेड एरिया, जो आपने प्रोवाइड किया है। यहाँ पर जो आपने कैलकुलेट किया है, दिस इज नॉट दैट एरिया। बात समझ में आ रही है? इससे तो आपने साइज कैलकुलेट किया ना, मगर साइज तो आप पे डिपेंड करता है। आप b इज इक्वल टू 7 फीट की जगह आप 8 फीट भी ले सकते हैं ना। तो फाइनली जब आप फिर उसके डिज़ाइन के लिए करेंगे, फुटिंग की डिज़ाइन के लिए, तो जो गिवन जो सिलेक्टेड साइज है जो आपने सिलेक्ट किया है वो आप यहाँ पर फुट करेंगे। सही, ये पॉइंट समझ गए कि नहीं? यस सर, समझ गए। पंचिंग शेयर डिमांड कैलकुलेट करें, सो बी स्क्वायर इज विद यू 7 का 7 सी प्लस डी आपने कैलकुलेट किया है, सी इज 18 प्लस 11 और इसको डिवाइड बाय 12 करें तो ये फुट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको क्यू यू में मल्टीप्लाई करें, सो पंचिंग शेयर डिमांड इज 90.85 के। ये समझ गए? अच्छा, आप पंचिंग शेयर कैपेसिटी के साथ इसको कंपेयर करें। पंचिंग शेयर कैपेसिटी 5 4 5 वही 0.75 है, 4 एफ सी प्राइम 3000 है, बी नॉट अभी आपने कैलकुलेट किया था 116 है, डी एवरेज इज 11, इसको 1000 में डिवाइड करें तो बस ये कन्वर्ट हो जाएगा किप में, इट इज कमिंग 209 किप। तो आप देखें डिमांड इज 90 एंड कैपेसिटी इज 209, so demand is greater than punching shear demand, capacity is greater than the punching shear demand, so therefore the thickness of the footing provided is sufficient or it is okay. Okay, बात समझ में आ रही है? यस सर। अच्छा, आगे आ जाए। Now you have to, once you select the thickness finally by satisfying the punching shear demand, what you will do, you will calculate the flexure demand mu. That is very simple, QU into B K square by 2. So K, very simple, width of footing, B minus C is dimension, divided by 2. 7 multiplied by 12, convert it into inches, minus 18, 18 is the size of column, divided by 2, it is coming 33 inch or 2.75 feet. Okay, तो यहाँ पर आप देखिए जरा, QU is 2.105, B is 7, K अभी आपने कैलकुलेट किया 2.75, स्क्वायर है तो इसको मल्टीप्लाई बाय, या इसको आप स्क्वायर करें या मल्टीप्लाई बाय और डिवाइड बाय 2, तो दिस इज कमिंग 55.72 फुट किप, या अगर आप इसको 12 में मल्टीप्लाई करें तो 668.6 इंच किप इज द टोटल फ्लेक्सर डिमांड और बेंडिंग मोमेंट। ओके, अब आगे तो आपको पता है कि ट्रायल एंड एरर करना है, ए इज इक्वल टू 0.2 डी एवरेज करें, ट्रायल एंड एरर से फाइनली ए इज कमिंग 1.71 इंच स्क्वायर। अब आप देखें, this is the calculated reinforcement coming from the demand. Okay, अब इसको अगर हम minimum reinforcement के साथ कंपेयर करें, this will be less than minimum reinforcement. जिस तरह मैंने आपको बताया था, always in most of the cases minimum reinforcement will govern. तो अब आप देखें minimum reinforcement जरा कैलकुलेट करें, it is 0.005 into B into D average. Okay, so it is coming, B is 7 feet, D average is 11 और ये 0.005 करें, 7 के साथ आप 12 मल्टीप्लाई करें, इट इज कमिंग 4.62 इंच स्क्वायर। तो अब आप देखें इस मिनिमम इज 4.62 और कैलकुलेटेड कितना है 1.71, विच वन विल गवर्न? 4.6। तो आप फाइनली एस मिनिमम देंगे। सही, तो आप ये फाइंड करेंगे, मगर मैंने आपको एडवांस से बताया कि इन मोस्ट ऑफ द केसेस
your minimum reinforcement will govern. Okay. Now the spacing can be calculated as follow. अच्छा, इससे ये spacing calculate करते हैं. तो spacing calculate करने की जरूरत नहीं है, आप पहले number of bars calculate करें. Using number 8 bar, number of bars. So 4.62 divided by 0.79 or 0.8, it is coming 6 bar. So 6 bars will be given in this direction as well as in this direction. आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. बात समझ में आ रही है? एंड इक्वली स्पेस्ड, आप इसको इक्वली स्पेस करेंगे. एट इक्वल स्पेसिंग आप ये बार्स देंगे. समझ गए? अगर आप इससे स्पेसिंग कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. 6.5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 12. ये अगर आप देखें ना, दिस इज टोटल वेट इसका कितना है? ये आपके पास है 7 फीट टोटल वेट ऑफ द फुटिंग. अच्छा, 7 फीट से आप माइनस करें 3 इंच कवर ये है और 3 इंच कवर ये. समझ में आ रही है बात? तो 6 इंच इज द टोटल कवर, डिवाइड बाय 12 करें तो दिस इज 0.5. तो आपके पास द टोटल वेट अवेलेबल इज 6.5. अच्छा, दिस इज द टोटल स्पेसिंग अवेलेबल कि आपने इससे क्लियर कवर माइनस किया. अब डिवाइड बाय स्पेसिंग आप जरा देखें 1 2 3 4 5. तो स्पेसिंग है 5, तो इसको 5 पर डिवाइड करें और इसको मल्टीप्लाई करें विद 12 टू कन्वर्ट इट इनटू इंचेस. तो आपके पास स्पेसिंग आ जाएगी 15 इंच सेंटर टू सेंटर. इसका मतलब है कि जो बार्स है दे आर गिवन एट 15 इंच सेंटर टू सेंटर. बात समझ गए? आप अगर ये कैलकुलेट नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है. अगर आप कैलकुलेट करें तो बेहतर है, क्योंकि प्रैक्टिकली इट विल बी प्रोवाइडेड एट द स्पेसिंग. ओके. Hence 6 bars can be provided in the foundation if they are placed 15 inch center to center. Maximum spacing should not exceed 3 inch or 18 inch. तो already satisfied है, क्योंकि 18 inch in that case will govern and 15 inch is less than 18 inch. यहाँ तक समझ गए? अच्छा, ये जो स्पेसिंग है आप दूसरे तरीके से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. स्पेसिंग किस तरह? देखिए, ये जो आपके पास मिनिमम, क्योंकि गवर्न तो मिनिमम इन्फोर्समेंट है ना, गवर्निंग, तो ये मिनिमम इन्फोर्समेंट आप कैलकुलेट करें इस तरीके से 0.005 मल्टीप्लाइड बाई ये जो बी है आप 12 इंच ले लें, यानी पर फुट आप इसको करें, और मल्टीप्लाइड बाई डी एवरेज. तो डी एवरेज हमारे पास 11 इंच है. ये जरा कैलकुलेट करें, शाबाश. एस मिनिमम कैलकुलेट करें. अब हमने पर फुट किया है, सही है? 0.66 इंच स्क्वायर पर फुट. अब यहाँ पर ये हमारे पास था इंच स्क्वायर में, मगर ये जो अभी मैंने किया इट विल बी इन इंच स्क्वायर पर फुट, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी की जगह 12 इंच डाला है. सही है? तो अब स्पेसिंग तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर नंबर 8 बार. स्पेसिंग विल बी इक्वल टू एरिया बार डिवाइड बाई एरिया बार इज 0.79 divided by calculated area which is 0.66 multiplied by 12. तो ये जरा स्पेसिंग कैलकुलेट करें, शाबाश. तो 14.36. तो अब आप देखें इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 15 इंच स्पेसिंग. ओके. तो इसी तरीके से भी आप स्पेसिंग कैलकुलेट कर सकते हैं. तो बहरहाल जो भी तरीका हो आप उसको ये कर सकते हैं. सही. ये फाइनल इसकी ड्राफ्टिंग है. आप देखें 1 2 3 4 5 6 बार्स है. बोथ आर मेन बार्स, दोनों को एरोस किए हैं.
नंबर 8 15 इंच सेंटर्स। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं और आप ये इस तरह भी लिख सकते हैं कि 6 नंबर 8 बार्स। बात समझ में आ रही है? या तो आप टोटल बार लेके 6 नंबर 8 बार, या इसी तरीके से नंबर 8 15 इंच सेंटर सेंटर लेके। इसमें कोई कंफ्यूजन है? नो सर। अच्छा, मैं वैसे अब आपसे पूछ रहा हूं, ये जो थिकनेस है ये तो हमने डिजाइन किया बस, इसमें ये आपके पास एक दूसरा एग्जांपल ये आप खुद करेंगे, इस साल नहीं है, और लेक्चर इज फिनिश्ड। मगर मैं वैसे आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत सारे रिक्वायरमेंट पढ़े, ये 15 इंच जो थिकनेस आप फुटेंगे, इज इट सफिशिएंट फॉर द गिवन कॉलम? गिवन कॉलम वंस अगेन आप देखें जरा, मैंने आपको बिल्कुल स्टार्ट में ये कॉलम अगर आप देखें, एग्जांपल column is 18 inch by 18 inch with 8 number 8 bars. So is this thickness sufficient for the given column with given reinforcement? डिजाइन तो हमने किया मगर और भी कुछ रिक्वायरमेंट्स है ना। सर वो हुक वगैरह के लिए उसकी डेप्थ। देखिए ये जो 8 नंबर 8 बार्स है इन कॉलम, these will be developed in this footing, तो उसके लिए 15 इंच thickness will not be sufficient। देखिए 8 नंबर 8 bars will be hooked in this footing। तो मैंने आपको बताया था this distance this must be at least fy divide by 65 fc prime into db। तो इससे अगर आप कैलकुलेट करें, ये जरा कैलकुलेट भी करें चले, fy हमारे पास 3000 है, fc प्राइम fy सॉरी 60,000 है, fc प्राइम 3 है और ये 65 है, और db डाया बार तो आपको पता है नंबर 8 बार है तो 1 इंच। ये जरा कैलकुलेट करें। सर ये फार्मूला जरा दोबारा बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? ये आप लोग भूल गए, fy डिवाइड बाई 65 अंडर रूट fc प्राइम इंटू डाया बार। ये दिस इज डेवलपमेंट लेंथ requirement with hook, okay, development length with hook। याद आ गया? यस सर। ये F5 60 है कि सर 40? ये तो मुझे पता नहीं है, यहाँ पर देखेंगे। ये 640 है, 40 है बिल्कुल। तो ये जरा करें, 40 के लिए करें। F5 40, FC प्राइम 3 है, 3000 है, 40,000 65 FC प्राइम 3000 DB 1 इंच है। What is LD? LDH. It is LDH basically. This distance must be LDH. Okay. 11.23। अच्छा 11.23। इसके साथ आप 2 बार डाया भी ऐड करें, क्योंकि यहाँ पर है ना, ये तो बिल्कुल एंड पर आप नहीं ले जा सकते। तो +1 इंच +1 इंच, क्योंकि एक बार डाया ये है और एक बार डाया ये है, सही, और प्लस क्लियर कवर इज 3 इंच।
सो 11.23 प्लस 5 इंच तो कितना आ रहा है? 16.23. 16.23. So you need at least 16.23 thickness for the development development of the column bars. The thickness, the given thickness is not sufficient. Okay. अगर ये ग्रेड 60 होता तो फिर इससे भी ज्यादा इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ वाई है। सही, तो ये चीजें भी फाइनली आप देखेंगे इन द डिजाइन। ओके। अच्छा, आप कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, वरना बस ये क्वेश्चन है, ये आप खुद करेंगे इसी तरीके से। आप ये क्वेश्चन करें। इफ यू सॉल्व दीज टू एग्जांपल्स, आइसोलेटेड फुटिंग दिस एग्जांपल, और ये जो वॉल फुटिंग की क्लास एक्टिविटी एक एग्जांपल थी, इफ यू सॉल्व दिस एग्जांपल तो फिर एग्जाम में देयर विल बी नो प्रॉब्लम। कोई क्वेश्चन हो तो पूछे, अदरवाइज फिर वाइवा स्टार्ट करते हैं। कोई क्वेश्चन है इसमें? No, sir.